Hello friends, welcome to this channel. This is the second part of history of world architecture. Right now we are focusing on history of Indian architecture. Let's see some of the important questions that may come in your GATE architecture, DDA architecture or any architecture or urban planning exam conducted by states. So my name is Rahul and you're watching Architecture and Planning with Rahul. So let's start with first question. The architecture of Sultanate Bengal is characterized by the use of. So friends, जो बंगाल में सल्तनत आर्किटेक्चर है उसमें मेनली ब्रिक्स का यूज़ हुआ था. इसके कुछ एग्जांपल हैं टंटीपारा मॉस्क, दाखिल दरवाज़ा और रसमंच. देखते हैं अगला क्वेश्चन. Timurid influence on the Sultanate architecture of India was in the form of. So the correct answer of this question is all of the above. और टिमुरिड के इन्फ्लुएंस की वजह से ही जो सल्तनत आर्किटेक्चर है उसका प्रोपोर्शन, कलर स्कीम्स और जो डेकोरेटिव टाइल्स हैं वो यूज़ होने लगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्ट ऑफ बिदर वॉज बिल्ट बाय. So the fort of Bidar was built by the Bahmani Sultanate. Next question is hammams were lit and ventilated by. So जो हमाम्स होते थे उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती थी रूफ में जो लाइट और वेंटिलेशन में हेल्प करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट मॉस्क ऑफ दौलताबाद नाउ कॉल्ड द भारत माता मंदिर शोज. So the correct answer is option number B, a continuity of architectural tradition of the region. Next question is a Hindu temple is. So the correct answer is option number A, it is a shelter of for divinity. Question number 7 is Buddhist viharas are. So viharas are generally used by monks for sheltering. So the correct answer is option number B, residential arrangement for monks. Sometimes the kings of the region built these viharas and donates to monks. Next question is the Indus Valley civilization was known for. So brick architecture was also used in Indus Valley civilization. Gridiron pattern of street, then plant drainage system with inspection chamber. So the correct answer is all of the above. So these all three are the features of Indus Valley civilization. Next question is in Western India, particularly Gujarat, Western Madhya Pradesh and Maharashtra, a unique type of temple superstructure was the. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमिजा. जो भूमिजा स्टाइल के टेम्पल्स हैं ये मेनली वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं इंडिया के. ये काफ़ी रिलेट है यादव आर्किटेक्चर से जिसे बाद में मराठास ने भी अपने डिज़ाइन में यूज़ किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्यन अशोकन कॉलम वर इंस्पायर्ड बाय. सो इसका करेक्ट आंसर है रूइंस ऑफ परसेपोलिस विच इज़ पार्ट ऑफ पर्शियन आर्किटेक्चर. Next question is the Chand Minar was built in. So the correct answer of this question is Daulatabad. Next is the water distribution technology of the Sultanates. So Sultanates में mainly pipes और conduits का यूज़ होता था जिसकी वजह से जो cities हैं वो काफ़ी दूर build की जा सकती थी water source से. और जो कनाट्स हैं वो एक यूज़फुल टेक्नोलॉजी थी और बहुत important टेक्नोलॉजी थी. So the correct answer is all of the above. Next question is the defense feature of fort of Daulatabad includes. So the correct answer of this question is option number C, dark tunneled passages. और इन्हीं टनल की वजह से जो डिफेंस फोर्स है उनका मूवमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता था किसी फोर्ट में. द मॉस्क ऑफ सिद्दी सईद इज बेस्ट नोन फॉर. So the correct answer of this question is ornamental screens. Next is the Sultans of Gujarat patronize an architectural vocabulary that derives from. So it derives from
Hindu and Jain temples. So friends, these were the 15 questions related to history of Indian architecture. In the upcoming part, we will cover history of world architecture. If you are new to this channel, please do subscribe and also share your feedback. If this video was helpful, please give a thumbs up. See you in the next video. Until then, goodbye.